So, good afternoon, student. In this lecture, we talk about the asymptotic notations. In the last lecture, we learn about how to calculate the running time of of any algorithm. If we have the number of statements and we have to calculate the frequency count, and easily we get the total time it takes. So, for the space complexity, we use the mathematical expressions to tell how much memory it require, how much memory any algorithm require. So for that the asymptotic notations are there. It is oftenly used to describe how the size of the input data affects an algorithm's uses of computational resources. So that the running time of an algorithm is described as a function of input size and for large n. So there are the number of asymptotic notations, like the first one is the big O notation, second one is omega, third one is theta, fourth one is little o, and sometime in most in the books of algorithm there are some other notation that is little omega notation. So starting with the first, the big O notation, the definition is this is f of n, that is the function n is equals to big O of g of n. They are the two function fn and gn. So this can be read as f of n is omega of g of n if there exists a positive integer n naught and a positive number c such that f of n is less than or equal to c into g of n for all n greater than and equal to n naught. Here the g of n is the upper bound. Upper bound means at the most of the function fn, at most value. ठीक है, तो here is the graph which shows the given definition. Here on the x-axis we have the n, that is the number of inputs, that are the input values. On the y-axis we have t, that is the time taken by these statements, the number of statements given in the algorithm. So the graph shows that there is a function n whose value is always less than equal to c into g of n for all n greater than equal to n naught. We can easily uh, explain this by the example. We have the f of n की वैल्यू क्या है 2n स्केयर प्लस n एंड जी एन की जी ऑफ n की वैल्यू क्या है n. c हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू जो कोई भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर वैल्यू क्या ली है 10. तो कंडीशन क्या है उसकी बिग ओ की कि एफ ऑफ एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन. ये हमेशा रिमेंबर याद रखना है. तो 2n² प्लस एन, एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है 2n² प्लस एन, बिकॉज एफ ऑफ एन हमें गिवन है यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन. अगर एन की वैल्यू 2 हो, एन की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5, तो प्रूव दैट कंडीशन. ठीक है, सी भी क्या है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं. सो हियर 2 ब्रैकेट में n² है तो n की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2, दिस इज द पावर साइन, 2 पावर 2. ठीक है, प्लस 2 n की वैल्यू 2 है, लेस देन इक्वल टू 10 क्या है c की वैल्यू है एंड g ऑफ n इज 2. क्लियर, n की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर g ऑफ n क्या था n. तो आफ्टर फिलिंग दैट वैल्यूज वी कंक्लूड दैट 10 इज लेस देन इक्वल टू 20. बाय calculating this expression we get some output, that is 10 is less than equal to 20, which is true for the big O notation. F of n is 10 which is less than equal to c into g of n, total value is 20. तो condition is true for all n greater than equal to 1. आप जो भी वैल्यू लेंगे n greater than equal to 1 सभी के लिए ये ट्रू होगी. बट अगर g ऑफ n
द फंक्शन जी ऑफ एन इज इक्वल टू लॉग एन है, तो बाकी सारी वैल्यूज सेम है, देन द कंडीशन इज रॉन्ग. हियर the value 66 less than equal to 10, we cannot get, we don't get the correct value as we mentioned in big O notation. फंक्शन एफ एन तो हमेशा लेस देन होना चाहिए जी ऑफ एन से, बट यहाँ पर क्या है वो ग्रेटर आ रहा है, तो दिस इज द रॉन्ग. बट दिस कंडीशन इज ट्रू एंड दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो दिस इज द अपर बाउंड केस. तो अपर बाउंड केस में क्या है, एट मोस्ट उसके करीब जो भी वैल्यूज़ है वो हमें गेट होती है. नेक्स्ट वन इज द ओमेगा नोटेशन. ओमेगा नोटेशन में भी क्या है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा, दिस साइन इज फॉर ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन if there exists a positive integer n and a positive number c such that the f of n is greater than equal to c into g of n for all n greater than equal to n naught. Here the wrong condition is true for the omega notation. So this is the graph. On the x-axis we have the number of input, on the y-axis we have the time complexity given, the number of time or the time taken by the algorithm or the number of statement. So g of n is the lower bound. lower bound मतलब at least, upper bound क्या था, at most, at least nearby of the function fn. So this can also be explained by another example. If we take 2n plus 1 and 2n plus 3 is the value of f of n and g of n is equal to n. c की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू क्या है 2. By filling that value we get the output, that is 7 is greater than equal to 2, which is true for the omega notation for all n greater than equal to 1. So next one is the theta notation. This may include both the qualities of big O notation and the theta notation. So here it explained as f of n is equal to theta of g of n if there exists a positive integer n naught and two positive constants c1 and c2 such that c1 into g of n is less than equal to f of n and less than equal to c2 g of n for all n greater than equal to n naught. So the function is both an upper bound and a lower bound, which means it gives the exact time or the average time for the function f of n for all the values of n where n is greater than equal to n naught. Here the graph shows the values f of n which is greater than c1g into n but less than c2 into g of n. So here is the example. If we take the same example, 2n plus 3 g of n is n, what we have, the values of c1 equals to 1 and c2 equals to 5. The value of n is equals to 1. For that value we conclude that 1 is less than equal to 5 and less than equal to 5. So this is true for the theta notation. So next one is the little o. Here the f of n is equals to little o of g of n if and only if there is a function f of n equals to little o of g of n and fn is not equal to omega g of n. Clear कि f of n जो है omega के इक्वल होना नहीं चाहिए. So why is what is the reason to analyze the algorithm? Why we analyze the algorithm? The question arises to answer that to predict the resources that the algorithm requires. For example, the computational time, CPU consumption, CPU कितना टाइम ले रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए. मेमोरी स्पेस, रैम में कंजम्पशन कितनी हो रही है मेमोरी की उसको पता करने के लिए. कम्युनिकेशन बैंडविड्थ कंजम्पशन कितनी हो रही है, कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज़ हो रही हैं पर सेकंड के हिसाब से उसे कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं. सेकंड कंडीशन इज़ टू प्रिडिक्ट द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम बाय कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड. कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जितने भी एल्गोरिथम में अगर 10 स्टेटमेंट है तो 10 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम
किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं. सो दीज आर द एसिम्प्टोटिक नोटेशन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एन एल्गोरिथम. वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. what in the interviews also, the interviewer ask about what is an algorithm, why we need it, how to analyze an algorithm, what is the efficiency of an algorithm, what are the symptotic notations, what is are the differences between these symptotic notations. So understand this concept easily.